ॐ श्री दुर्गायै नमः। अधः श्री दुर्गा सप्तशती नवमोऽध्याय। बन्दूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पास्याङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमद्दाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकारशुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपन। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोदा मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तदा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दप्तौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययु आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयो शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्तां चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेरणासिमुत्तमम् निशुम्भस्यासु चिच्छेदचर्म चाप्यष्टचन्द्रकं चिह्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाद्मातो निशुम्भोद शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविज्यादगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्तां दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां स रथस्तस्तदाच्युश्चैर्गृहीतपरमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चाकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककुबो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवदविदायिना ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेव महामदैः पूरयामास गगनं गां तदैव दिशो दश ततः काली समुत्पच्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेच्च विहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागच्छ या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कयां सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्गातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते शुम्भमुक्तान् चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितां चरान् चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोधसहस्रश ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान तं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुक आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिनं तदा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वर चक्रायुधे दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृत तस्या पतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण साक्षाशूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो पर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवर्तत शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चकादोग्रं दंशाक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तदा काली शिवदूती तदा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्ने सुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नः पेतुस्तदा परे वाराही तुण्डगातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृता
वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रविमुक्तेन तदा परे केचिद्विनेशरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपै ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निसुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः।